जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता अथ चतुर्त्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच एवं प्रचलिते चास्मिन् वीरभद्रे गणान्विते दुष्टचिह्नानि दक्षेण दृष्टानि विबुधैरपि उत्पाता विविधाश्वासन् वीरभद्रे गणान्विते त्रिविधा अपि देवर्षे यज्ञविध्वंससूचका दक्षवामाक्षि बाहुरु विस्पन्द समजायत नानाकष्टप्रदस्तात् सर्वथा शुभसूचक भूकम्पः समभूतत्र दक्षयागस्थले तदा दक्ष पश्यच्च मध्याहे नक्षत्राण्यद्रुतानि च दिशश्चासन्सु मलिना कर्बुरो भूदिवाकर परिवेशसहस्रेण सङ्क्रान्तश्च भयङ्कर नक्षत्राणि पतन्ति स्म विद्युदग्निप्रभाणि च नक्षत्राणामबुधक्रा गतिश्चाधोमुखी तदा गृधा दक्षशिरस्पृष्ठा समद्रुता सहस्रश आसीदगद्रपक्षच्छाये सच्छायो यागमण्डप ववाशिरे यागभूमो क्रोष्ठारो नेत्रकस्तदा अल्कावृष्टिरभूत्तत्र श्वेतवृष्विष्कसम्भवा खरावाताववुस्तत्र पांशुवृष्टिसमन्विता शलभाश्चासमुद्धृता विवर्तानीलकम्पिता नितश्च पवनैरुर्ध्वं स दक्षाध्वरमण्डप देवान्वितेन दक्षेण यः कृतो नुतोऽनृत वेमुद्रक्षादयः सर्वे तदा शोणितमुद्रतं वेमुश्च मासखण्डानि सशल्यानि मुहुर्मुहुः सकम्पाश्च बभूवुस्ते दीपावातहता इव दुःखिताश्चाभवन् सर्वे शस्त्रधारा हता इव तदानीनादजातानि बाष्पवर्षाणि तक्षणे प्रातस्तुषारवर्षिणी पद्मानीव वनान्तरे दक्षिणी जातानि ह्यकस्माद्विशदान्यपि निशायां कमलाश्चैव कुमुदानीव सङ्गवे अश्रुग्ववर्षदेवश्च तिमिरेणावृता दिश दिग्धा होभू द्विशेषेण त्रासयन् सकलाञ्जनान् एवं विद्यान्यरिष्ठानि ददृशुर्विबुधादय भयमापेदिरेत्यन्त मुने विष्मादिकास्तदा भुवि ते मूर्छिता पेतुर्हता स्म इति रयन् तरवस्तिरसज्जाता नदीवेगहता इव पतित्वा ते स्थिता भूमौ क्रूरा सर्पा हता इव कन्दुका इव ते भूयः पतिता पुनरुत्थिता ततस्ते तापसन्तन्ता रुरुदुकररि इव रोदनध्वनिसङ्क्रान्तो प्रयुक्तिका इव सैव कुष्ठास्ततः सर्वे तदा कुष्ठितशक्तय स्वस्वोपकण्ठमाकण्ठं लुलुठुकमठा इव एतस्मिन्नन्तरे तत्र सज्जाता चा शरीरवाक् श्रावत्यखिलान् देवान् दक्षं चैव विशेषत आकाशवायुवाच धिगजन्म तव दक्षाद् महामूढोऽसि पापधि भविष्यति महदुःखम् अनिवार्य हरोद्ववम् हा हा पीनोत्र ये मूढास्तव देवादयः स्थिता तेषामपि महादुःखं भविष्यति न संशय ब्रह्म उवाच तच्छ्रुत्वाकाश
वचनं द्वद्वारिष्ठानि तानि च दक्ष प्रापदयं चाति परे देवादयोऽपिह वेपमानस्तदा दक्षो विकलश्वाति चेतसि अगच्छ शरणं विष्णो स्वप्रभुरिन्दिरापते सुप्रणम्य भयाविष्ठ संस्तूय च विचेतन अवोच देवदेवं तं विष्णुं स्वजनवत्सलम्। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्डे दूषकूनदर्शनं नाम 34. जय गुरुजी।